So electrostatic potential. What is electrostatic potential? If a charge is there and we want to find potential at a distance r from the charge, then the potential is found out by work done by charge. Work done in moving a charge from infinity to that point. So that formula will be K into Q by R. K value is K means 1 by 4 pi epsilon naught, which is equal to same as we have studied 9 into 10 to the power 9 in MK system or 1 in CGS system. This is an MK system and in CGS system its value is 1. Okay. So electrostatic potential means it is a scalar quantity V equal to work done by charge. Work done in moving a charge from infinity to that point is potential and it is given by KQ by R. K value is given as 9 into 10 to the power 9 in MK system and 1 in CGS system. And potential energy means work done. It is symbolized as U. U will likhi pariba, W will likhi pariba. So their formula hochi V into Q. V potential into charge. So duita charge jodi electric field absence re rahithibe tanko bhitere potential energy formula kon hobo K Q1 Q2 by distance between them. Distance between Q1 and Q2 mu lekhichi R12 sethibai R12 lekhichi. Jodi electric field rahichi, jodi electric field achi au electric field bhitere mu duita charge ko rakhichi tebe tankaro total potential energy kete hijibo Q1 pai hobo Q1 into V plus Q2 into V. It is due to presence of field ro interaction jogo eta aschi plus eta to amar original thila K1 Q2 by R12. Next phase ku jiba for a system of charges pai potential ba potential energy am kemti paiba. It is very simple. Ako numerical me kichi solve further jani pariba aram se. So charita corner re charita charge achi Q1 Q2 minus Q3 minus Q4 koithio find the potential at the center. How to find? So potential formula we know K Q1 by distance, K Q2 by distance. All the distance from the corner are same. And it minus kind of na Q3 ro symbol minus achi charge. Q4 minus achi. So for triangle 3 charges system, potential energy kemti paiba K Q1 Q2 by distance between them plus K Q1 Q3 by distance between them, K Q2 Q3 by distance between them. R1 to R2 3 R1 3 एवडा होची distance Q1 Q2 Q2 Q3 सेथि हम लिखछि चारिटा सिस्टम ऑफ चार्जेस पे केमत पाइबा 4 चार्जेस थिबे 1 को धरिबा 1 को 2 सहित Q1 Q2 1 रो 3 सहित Q1 Q3 सेतले ए डिस्टेंस डायगोनल इज द डिस्टेंस देन Q1 Q4 Q1 रो Q4 R14 लिखा है जेटी देन Q2 रो Q3 Q1 काम सरला Q2 पाकु जिबा Q2 Q3 Q2 Q4 Q1 Q2 सहित हे जाय छि ताको लिखिबा नै रिपीट हे जिवो नेक्स्ट लास्ट रहला कि Q3 रो Q4 सहित डिस्टेंस ला R34 डायरेक्ट मिसेले ताको हम पाइबा एटा किछि बडो जिंस नै ओनली कैलकुलेशन रे भूलभाल करंती पिला नले सब ठीक ठाक रे and the relation between electric field and potential, this is very very important. Electric field is negative of potential gradient. The numerical आपको नहीं कि मुझे इसी simple formula को बेस करके numerical अच्छी देखिले बुझी परिवार आराम से तो आपको हमें next page को जीवा to what potential we must charge an insulated sphere. Surface charge density कथा कहते ली surface charge density charge by area, so charge is sigma into a आपको बस एक हमें देखिएगा आपको ठीक है এটা बहुत important question. This question is very very important. পরীক্ষায় আসিছি এটা দেখি দেবা ভালো সে চিত্ରରେ বুঝাইছি স্মল চার্জ মিশিলে টোটাল চার্জ আসিলা
सो स्मॉल चार्ज रेडियस स्मॉल आर टोटल चार्ज मिसी गला पर रेडियस आर हैला सो वॉल्यूम को इक्वल करके हमें कैपिटल आर रिलेशन पाइले स्मॉल आर सहित तबे पोटेंशियल पाइबा फाइनली पोटेंशियल टा पाइ जिबा पोटेंशियल को हमें फाइनल पाइला पर डाइपोल जो फार्मूला kp cos theta by r square for axial line kp by r square equatorial line 0 and this is some numerical related. Today's topic now we will study equipotential surface. Equipotential means the surface over which potential remains same. Potential remains same. So here and the electric field is always normal to the equipotential surface. देखिए गोटे स्फेरिकल शेप नेले स्फेरिकल शेप रो चार्ज रहला सेंटर रे द रेडियस r तीनटा पॉइंट मुनेली a b and c ओवर द सरफेस and at a potential केते kq by r कना चार्ज q डिस्टेंस हला तारो सरफेस पर्यंत r रेडियस kq by r जोटा कि vb सहित भी समान कना vb पाखरे भी डिस्टेंस ता होची से r सो दुटा पोटेंशियल डिफरेंस हबो दुटा पॉइंट भितरे va minus bb हबो केते 0. So work done in moving a charge from A to B केते potential difference into Q which is equal to 0. Potential जेतु समान ताक भितर potential difference 0. This is important statement. Work done in moving a charge over equipotential surface is 0. This is important statement. Now potential energy due to dipole placed in an external field. When a dipole is placed in external field, we have studied that it will experience a torque which is equal to Pe sin theta, and when it is placed inside electric field and we want to do some work in shifting it through an angle theta from the angle theta, then u equal to minus Pe cos theta. P is dipole moment, E is electric field intensity, and theta is the angle by which dipole is inclined to the electric field. Then it have two conditions. One is stable equilibrium. It is very important. Stable equilibrium means theta is 0 degree. It is shown in the diagram. And unstable equilibrium means theta is 180 degree. That means dipole moment direction is opposite to the direction of field. Dipole moment direction I have told minus q to plus q. And when theta is 90 degree, at that case potential energy is 0. Many times question can be asked related to this. This is conceptual question. Okay. So when numerical पढ़ियो numerical सहित conceptual भी किछि रही थाए. So numerical केमति आसियो देछि उटे देछि हमरो three charges minus q plus q and minus q are placed at equal distances on a straight line. If potential energy of the system of three charges is 0, find q by q. Okay. So minus q plus q minus q I have arranged and the distance are same. So let us take the distance r and r. So potential energy of the system माने ए दुईटा चार्ज भितरे potential energy ए दुईटा चार्ज भितरे potential energy plus यारो या सहित potential energy तीनटा potential energy मिसेली जतरा q capital Q ने distance r small q ने distance 2r and it fit क्या रहले 2r है जिवो रेते ले 2r. Okay बुझियला. तो now next aku simplify करके 0 कर देले q by q पाई गेले हमें 1/4. Now next question, an electric dipole of length 2 cm is placed with its axis making an angle 60 degree to uniform electric field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. Experiences a torque of 8√3 Newton into meter. Find the magnitude of charge of the dipole and potential energy of the dipole. This the question is twisted. देखिए कौन देइछि 2a given distance of the dipole means 2a मन रखियो a नबनी 2a 0.02 meter and theta is 60 degree, E is 10 to the 5 Newton per coulomb. Then we have to find tau also given, torque given. We have to find potential energy. Potential energy पाया ପାଇଁ कोन दरकार Pe cos theta. E अछि theta अछि P नाही. P केन पाइबा Q into 2a. So Q पाइबा केमति tau equal to P sin theta पके देले. एठु हमें P भी डायरेक्ट पाइ परिबा किंतु Q पाइबा ପାଇଁ Q into 2a पकेले. 2a वैल्यू देइछि Q value हम पाई गेलो एठी केते 8 into 10 to the minus 3 coulomb by 8 milli coulomb. Then U equal to minus P cos theta पके के हम पाई गेलो केते U value is minus 8 जो मेथि आंसर बाहर करिया ପାଇଁ पड़िबो.
Dielectric constant, next topic होची dielectric constant. Dielectric means an insulator in which polarization can be done by placing it inside electric field. जेतले electric field रे नथिबो तार charges सब plus minus charges arrange हेकी नथिबे, plus minus arrange हेकी नथिबे. When electric field is applied, electric field भितर continuously हमें किछ समय पे रखिबा, देखियो जे minus plus arrange हेकी गोटे direction रे रहबे. That means minus plus arrange हेले माने सेटा गोटे dipole moment. So total गोटे dipole moment create हेजिबो. That is polarization. That process is called as polarization of the charges. And dielectric constant is the dielectric strength. केमति पाइबा हमें epsilon by epsilon naught, permittivity of any medium by permittivity of air. बा एटा भी मने रखियो important, E naught by E in terms of electric field in air by electric field in that medium. Now capacitor is a device which is used to store the charges. Spherical capacitor you have seen, cylindrical capacitor you have seen in the ceiling fans. So its work is to increase the capacitance to store the charges. How it will store? If the potential difference between two plates will decrease, this is the principle of capacitor पड़ी जाए. Question केमति आसियो? If V decreases, capacitance formula is Q by V. Capacitance is directly proportional to charge and inversely proportional to potential difference. If potential difference between two plates decreases, then capacitance increases. Okay. And what is the formula of capacitance? What is the formula of capacitance when air between the two plates is there? That air thibo, capacitance formula है epsilon naught A by D. A होची area of each plate. D is the separation. The next, if dielectric material of dielectric constant K and thickness T is placed, then in that case, capacitance formula is epsilon naught A by D minus T plus T by K. Spherical capacitor very easy. V on the sphere is V equal to KQ by R, and so C is Q by V, you know, Q by V is KQ by R, that is R by K, QQ will be cancelled, R by K. So in CGS system it is only equal to radius, and in MK system it is 4 pi epsilon naught R. So question will be given like that: if the distance between two plates is increased, distance between two plates becomes half, two plates become half, then what happens to the capacitance? What happened to the capacitance? You can say easily directly. Capacitance formula, you know, C equal to epsilon A by D. If D is half, so capacitance will become epsilon A by D by 2. So it will be twice of epsilon A by D. That is 2C. Like this, many numerical will be given and we have to solve it. I'll provide some numerical in the group. So next we will study about grouping of capacitors, series and parallel combination of capacitors. Series and parallel combination of capacitor will study in the next. Hello. So आमे जति की रखिथिलु चैप्टर को ताको पुनी कंप्लीट करिवा. So last part हमर रहि चैप्टर रो कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन रो केमिति सीरीज और पैरेलल लगा होची और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन तकर कैपेसिटेंस फार्मूला कोन रहउची आ ताको नै हमें केमिति ताको सॉल्व करिवु न्यूमेरिकल. ता छडा आ गोटे जिंस रहउची लास्ट जिंस एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. गोटे कैपेसिटर केते एनर्जी स्टोर करि पारुची. सो सीरीज combination of capacitors, parallel combination of capacitors. कैपेसिटर सिंबल मु कहितली एमिति दुईटा प्लेट पैरेलल थिबे, गोटे साइड पॉजिटिव गोटे साइड नेगेटिव, पॉजिटिव गोटे पॉजिटिव प्लेट गोटे नेगेटिव प्लेट. ओके. सो सीरीज कॉम्बिनेशन माने कोन? सीरीज कॉम्बिनेशन माने second plate of a first capacitor is connected to the first plate of second capacitor.
ये होची कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 ये C2 एमिति अनेक कैपेसिटर में लगे पारिबा सीरीज ए कॉम्बिनेशन को हम कहबा सीरीज कॉम्बिनेशन एथिरे ए सीरीज कॉम्बिनेशन रे वोल्टेज डिफरेंट आसीथिबो वोल्टेज सब कैपेसिटर रो प्लेट रे अलग अलग वोल्टेज आसीथिबो किंतु चार्ज सब बडे सेम रहे सीरीज कॉम्बिनेशन रे एटा होची तार गोटे क्वालिटी सो ए केस रे जदि हमें कैपेसिटेंस निर्णय करबा त कोन हो दिस कैपेसिटेंस फार्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 याको मन रखिया पय पड़िबो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पूरा ऑपोजिट कहार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर रो त मन रखिया पय पड़े इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रे पुनी हमें पढिबा रेजिस्टर कॉम्बिनेशन रे सो पैरेलल ले केमति थिबे पैरेलल ले समस्त कॉमन पॉइंट रहिबो ये गोटे कैपेसिटर समस्त कॉमन पॉइंट रहिबो so in this case what you will get in this case the voltage will remain same the voltage applied across each capacitor voltage will remain same but what will change will be in charge here charge will be q1 here charge stored will be q2 here charge stored will be q3 ए केस रे फार्मूला कोन हबो फार्मूला हम लिखिले c = c1 + c2 + c3 तो एटु गोटे जे अनुमान करि परथि सीरीज कॉम्बिनेशन रे कैपेसिटेंस कमी जाउची किंतु पैरेलल कॉम्बिनेशन रे कैपेसिटेंस ता बढ़ी जाउची डायरेक्ट ऐड होची ओके सो एनर्जी स्टोर्ड नेक्स्ट व्हाट होची हमर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मींस गोटे प्लेट आउटे प्लेट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिवो सो दैट चार्ज स्टोर विल बी मोर q = c * v we know q = c = q by v or q = c * v so potential difference should be increased so that the amount of charge stored will be more so to store this charge some work has to be done किछि वर्क से करिवो कैपेसिटर प्लेट किछि वर्क हो सेही वर्क टा को ही हमें कहिबो कोन कहिबो ना एनर्जी स्टोर्ड तार फार्मूला कोन तार फार्मूला आसीबो एनर्जी स्टोर्ड u = 1/2 q into v और 1/2 q जगह में cv बसेबा into v से जो हाफ cv स्क्वायर c जगह जदी q by v बसेबा q by v into v स्क्वायर से जो हाफ q into v सो एनर्जी रो तीनटा फार्मूला में यूज करि परिबा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1/2 qv हाफ cv स्क्वायर एंड इट आउट हैसियो हाफ cv स्क्वायर q स्क्वायर बाय 2c c b जगह रे बसेबा q by c q स्क्वायर बाय c स्क्वायर b जगह रे q by c से जो q स्क्वायर बाय c ओके से तीनटे फार्मूला हमें यूज करि परिबा ठीक अछि आको नै हमें केमिति न्यूमेरिकल सॉल्व करछु देखौछि गोटे छोटो एग्जांपल साधारण एग्जांपल हम दोछि प्रथमे यदि 3 कैपेसिटर्स 2 farad 4 farad and 6 farad are connected in series find net capacitance find the net capacitance series combination formula direct कहिछि 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 so 1/2 + 1/4 + 1/6 so LCM is 6 3 sorry 6 avani LCM 12 6 + 3 + 2 11/12 that is 1/c मान रखियो c = 12/11 so तुम कंफ्यूज करिया पई ऑप्शन रे आंसर एमति थिबो 11/12 ये बहुत इजी क्वेश्चन किंतु पिला एथिरे भी भूल करंती काहे ना ऑप्शन रे हमर ए 11/12 करके ही छाड़ देथिबो सो पिला सेठी ऑप्शन चूज कला बेले 11/12 करके भी देखि कि भूल रे पड़े आसन ठीक अछि तो ए दिग प्रति हमको ध्यान देबा पय पड़ियो सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा सो इटी हमें पाइलो गोटे क्वेश्चन two capacitors 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery if voltage across 6 microfarad capacitor is 2 volt find voltage across the battery तो टोटल वोल्टेज भाइबा पय पड़िबो चित्र करी हम देखैछि सो
हमर 12 माइक्रोफैराड अक्रॉस रे केते वोल्टेज हमें जानी ना तो केमती पाइबा एटा होची सीरीज कॉम्बिनेशन में कोन कांस्टेंट रे हम कहतली चार्ज कांस्टेंट रे सो चार्ज फॉर 6 माइक्रोफैराड q1 इक्वल टू चार्ज फॉर 12 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड रे चार्ज कोन होबो चार्ज हो टोटल कैपेसिटेंस इनटू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज C1 into V1 into V1 equal to C2 into V2 so या पाए C1 होची 6 माइक्रोफैराड into V1 टा केते 2 equal to ता पाई C2 होला 12 into V2 टा बाहर करियो so V2 will be how much 1 volt V2 will be 1 volt so total voltage हम केमति पाइबा दुटा वोल्टेज को मिसे दबा 2 plus 1 that is 3 volt बुझिया आ गोटे क्वेश्चन हम पाखर आसेरा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत एमती क्वेश्चन परीक्षा रे आसी छी हम देखिबा two capacitors when connected in parallel gives capacitance of 5 microfarad and when connected in series gives capacitance of 1.2 microfarad तो आको हम केमती सॉल्व करिया से कहै टोटल कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस केते बाहर करो केमती करिया सीरीज रे फार्मूला हम जानि छु 1/c = 1/c1 + 1/c2 ताक जदि हम सॉल्व कर देबा c1 c2 एलसीएम बोला c1 + c2 रहिबो सो c = केते हिजो c1 c2 / c1 + c2 सो c रा केते सीरीज कॉम्बिनेशन में c रा वैल्यू देछि 1.2 = c1 c2 / c1 + c2 पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको कोन देछि c1 + c2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला डायरेक्ट देछि 5 माइक्रोफैराड सो c1 + c2 जगह हम जदि 5 बसई दबा तबे इठी कोन पाइबा 1.2 = c1 c2 / 5 सो याको हम गोटे इक्वेशन कन्वर्ट करिबा याको नै कि हम गोटे इक्वेशन में कन्वर्ट करिबा 1.2 माने 12/10 = c1 c2 / c1 * c2 जगह हम केते बसई पारिबी 5 - c1 गोटे इक्वेशन पाइबा पय तले अछि केते 5 एठी कटिगला 5 10 एला 6 so 6 = 5c1 - c1 square ये होछ गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन c1 square - 5c1 + 6 = 0 आको जदि हम सॉल्व करिया c1 रो डेटा वैल्यू पाइबा 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड and 3 microfarad so these are the answers okay देखो हम पाखरे आ गोटे क्वेश्चन आसी पहुंची 3 capacitors of equal capacitance when connected in series have capacitance of C1 and when connected in parallel have capacitance C2 then C1 by C2 रो मूल्य केते देखो चारटा ऑप्शन देइते बाछियो देखियो हमें समस्त कर कैपेसिटेंस सेम सो माने करो C1 = C2 = C3 = C माने करो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोन लिखिबा ना हमें टोटल कैपेसिटेंस केते हिजो पैरेलल रे C + C + C = 3C सीरीज रे कोन 1/CS एटा को हम कोन नउछु C पैरेलल कॉम्बिनेशन C2 देछि ना तो C2 C1 सीरीज रे देछि C1 1/C1 = 1/C + 1/C + 1/C which is equal to 3/C ओके सो हम कोन निर्णय करिया पय पडियो C1/C2 तो C1 = केतेला C/3 हे गला C1 C/3 C2 is 3C so now C1/C2 = C/3 by C2 is 3C so देखो भलो भाबरे CC कटि गला 1/9 ऑप्शन रे दिथिबो हम तो किछि वैल्यू देनी कैपेसिटेंस रा हम केमति वैल्यू बाहर करबा किंतु एई भलिया क्वेश्चन परीक्षा रे बहुत तरह आसीछि सो हमें जहाँ देखि ता थिला न्यूमेरिकल बेस्ड एबे किछि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिया कैपेसिटेंस रो डायग्राम बेस्ड केमति होछि 4-5 टी कर देले क्लियर आईडिया आछि त निजे प्रैक्टिस करियो सो फर्स्ट आको देखिबा मु वैल्यू गुडी को केवल C ही नै छी देखोना से वैल्यू दे पारे 10 20 15 2 जहाँ भी दे पारे डरिवार किछि नै फर्स्ट हमें जानिबा केमिति ताको सॉल्व करिया पई पड़िबो देखो ई डायग्राम रे फर्स्ट डायग्राम रे हमें केमिति बाहर करिया कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B से कहै छी A B भीतर कैपेसिटेंस बाहर करो टोटल कैपेसिटेंस डायग्राम रे तो हमें केमिति पिटेबे त पछाडो पिटे आसीबा तो फर्स्ट देखिबा ए दुई जण अछंती सीरीज रे ए दुई जण सीरीज रे अछंती तो ये ब्रेक हे किटी कोन हे जिवो सीरीज कॉम्बिनेशन रे कैपेसिटेंस हे जिवो C/2 ये गला C/2 ठीक अछि ब्रेक कर देले
तापर हम जतरे पुणी सॉल्व करिया पुणी सॉल्व करले हम कोन पाइबा C/2 and C are in parallel ए दिजन parallel रे अछि जानि पारथु parallel ला माने कोन हिजियो नेट कैपेसिटेंस एठी हे गला C plus C/2 that is 3C/2 now ए नथियो now हमें पाइबा ए तीनोटी भितर केमिति कोन कॉम्बिनेशन हेले सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक अछि सीरीज कॉम्बिनेशन माने फार्मूला पके दे 1/C plus 1/C plus 1/3C/2 is 1/CS सो फाइनल जहां आंसर पाइबा ताको उल्टे देबा रिवर्स कर देबा CS पाइबा सेमिति ए डायग्राम बुझबा ए डायग्राम रे कोन हम जानि पारछु ए दुईटी एंड रे हम बाहर करबा कैपेसिटेंस को एंड रे बाहर करबा सेटा होछि इंपोर्टेंट सो ए दुईटा एंड रे हम बाहर करिया देतले फर्स्ट देखिबा ए दुजन सीरीज रे अछंती तापर पुनी ए दुजन सीरीज रे अछंती तीन जन पैरेलल रे अछंती सो हम सॉल्व करी C सीरीज रे थिले कोन हे जिवो ये हे गला C/2 सेमिति तळे C अछंती से जे कोनसी वैल्यू दे पारे वैल्यू को निजे सॉल्व करिवा अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करियो C/2 2C वर्तमान तीन जन जाक पैरेलल माने हम फार्मूला जानि डायरेक्ट मिसे देबा पैरेलल फार्मूला C/2 plus C/2 plus 2C which is equal to ये हला C plus 2C 3C जा वैल्यू देथियो तो से गोटे टाइप रो थिला ये गोटे टाइप रो से सेम देखाउ छ दिटा डायग्राम देखाउ थिला किंतु एठी देखंतु C ये C 6C ताको भितरे ये गोटे ब्रिज कर देछि से ताको सेपरेट करछि मझिरे जो कैपेसिटर लागिला C ये एपट साइड और अपर साइड को सेपरेट करला काहे कि ना हमर दुईटा एंड पॉइंट एठी देछि तो हमें सर्किट को कंप्लीट करि परिबा नाही तो एठी देखिबा एटा ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसेछि आ एटा बहुत ही इजी काहे कि देखो एठी हम देखिबा C हमें देखिबा लेफ्ट साइड से जो ब्रिज रो लेफ्ट साइड और राइट साइड दुटा कैपेसिटेंस रेशियो जदी सेम थिबो राइट साइड रेशियो सहित तबे हम कोन करबा ए ब्रिज टा को हटेई देबा देखिबा एठी रेशियो टा कोन होची C आउ 2C रेशियो C/2C सन 1/2 ठीक अछि एपर साइड रेशियो 3C/6C which is equal to 1/2 सो रेशियो समान अछि माने एटा हमर हटि जिवो त हम जतरे सॉल्व करिबा ए मझी कैपेसिटेंस को हमें धरिबा नाही तो हमें कोन पाइले वर्तमान C and 3C are in series 2C and 6C are in series सो ए दिजन को 6 सीरीज रे हमें सॉल्व कला पर कते पाइबा से लिखि दबा C and 3C 1/C plus 1/3C 3C ला LCM ए गला 3 plus 1 that is 4/3C त माने उल्टी जीवो 1/CS से जो 3C/4 सेमति एपर साइड रे कते पाइबा 2C and 6C 1/2C plus 1/6C LCM is 6C ये ला 3 plus 1 से 4/6C ये चले 3C/2 ओके ये ला 3C/2 सो पैरेलल माने हम डायरेक्ट ऐड करियो सो ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत तरह आसे कंफ्यूज करिया पई पिला को सो नेक्स्ट आकु देखिबा याकु मध्ये हमें ए दुईटा एंड रे कैपेसिटेंस बाहर करिबा केते सो हमें पछड़ दिबा ए पॉइंट देखो किछ कंफ्यूज होबा नै ए दुई जन कैपेसिटेंस ये और ये पैरेलल ले लागछन काहे दुई जन को गोटे पॉइंट एठी आ गोटे पॉइंट एठी सो प्रथमे ए दुई जन को हमें कैपेसिटेंस बाहर करिया पैरेलल लागला माने कोन हो C plus C 2C हिजो सो ए जगह रे हम कोन करिबा दुई जन को हटेई की गोटे कर दबा 2C अगेन 2C और C केमति अछंती जानि पाथो पैरेलल सो 2C और C को हटेई की हम कोन लिखि दबा 3C वर्तमान तीन जन जाको सीरीज रे अछंती बारे हम डायरेक्ट फार्मूला पके 1/C plus 1/C plus 1/3C 1/CS सीरीज डायरेक्ट सॉल्व करे 3C ला LCM 3 plus 3 plus 1 it is 6 plus 1 7/3C 1/CS so C is equal to 3C/7 यो जी सर्किट डायग्राम को नेके हम सॉल्व करिबा किमा ट्रायंगुलर देथै पारे ट्रायंगुलर देले भी किछ कंफ्यूज होबा नै ट्रायंगुलर को साइड रे भाग करिया पे देथिबो ट्रायंगल शेप रे देथिबो C C C A B and C से कोइथो कैपेसिटर्स A B D सब जान C कैपेसिटर सिंबल देछि जन D नेगली से कोइथो कैपेसिटेंस अक्रॉस AB बाहर करो फाइंड कैपेसिटेंस अक्रॉस AB C AB केते त माने A पॉइंट एंड B पॉइंट आर एंड पॉइंट्स तो हमें देखिबा सेते बेले ए दुई जण सीरीज रे रहले आ सते पैरेलल ले तो हमें सॉल्व केमति करिबा AD and BD ए दुई जण सेते बेले सीरीज हे गेले माने C plus C/2 हे जिवो
c/2 आ सहित c पैरेलल c/2 plus c इट इज इक्वल टू 3c/2 ठीक अछि वैल्यू अलग अलग देते पारे c 2 c 3 c देते पारे तो हमें ताको देखिबा को अक्रॉस रे अक्रॉस b एंड d कहिथिबो b एंड d जेतला कहिबो सेतबेले ए दि जण सीरीज रे रहले आ सहित पैरेलल रहले अक्रॉस a एंड d a d को हमें एंड पॉइंट धरिबा सेतबेले ए दि जण सीरीज हि जिवे आ सहित पैरेलल बुझियला एमिति नै कि हमें ताको जत्ते वेराइटी सर्किट डायग्राम सॉल्व करिया सेते हमरो क्लियर हो तो कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन रो प्रॉब्लम मु एठी सारुची नेक्स्ट एनर्जी स्टोर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर रिलेटेड तीन चार प्रॉब्लम करिया तापर हम ग्रुप रे क्वेश्चन शेयर करबी ठीक अछि सो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर को नेकी हम बाकी तीन टी क्वेश्चन अछि ए तीन टी क्वेश्चन कला पर हम जान भाबुची तुम क्लियर इज डाउट आ ताको नेकी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर परियो तार जब सॉल्व करिवा फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज ए 24 माइक्रोफैराड कैपेसिटर when potential difference between plates is 500 volt so they deichi हमको so direct दे दeichi आंसर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर 1 2 3 1 नंबर आंसर रो आंसर हमें पाइबा वर्क डन बाय एनर्जी इज हाफ एटी हम पाखरे अछि v अछि आ कोन अछि c अछि हाफ c * v स्क्वायर हाफ c जो देइछि 24 माइक्रोफैराड पिला 24 नै कि भी आंसर बाहर कर देबे 24 को नहीं कि सी आंसर भी देइथिबो ऑप्शन रे तम सेटा पिला टिक मार देबे किंतु माइक्रो को भूली जिवे सब ताको हमें कन्वर्ट करिया पई पड़िबो 10 टू द पावर -6 इनटू 500 बुझियला सो 24 ये 12 हेला ये 25 60 इनटू ये 10 टू द पावर -4 थिला सो 6 इनटू 10 टू द पावर -3 10 टू द -4 3 जूल ओके -3 माने मिली भी हम लिखि रे मिली जूल सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बुझिबा व्हेन अ चार्ज ऑफ 0.1 coulomb is stored in a capacitor having potential difference between plates 200 volt find the energy required so इठी हम पाखरे अछि कोन q अछि आ अछि v सो हम एनर्जी रो फार्मूला जानि छु हाफ qv सो किछि टेंशन माने कि डायरेक्ट फार्मूला पकेबा आंसर पाइबा 1/2 q will 0.1 into v is 200 so 2 it is 100 so 100 into 0.1 is 10 joule next third question बुझिबा हमें third question बेसी किछि नाही two parallel plate capacitors separated by 2 mm in air having capacitance of 3 into 10 to the power -4 so जेतरे 2 mm थिला सेतरे कैपेसिटेंस थिला 3 into 10 to the power -4 farad -14 farad जेतबेले सेपरेशन हेगला 6 mm सेतरे कैपेसिटेंस केते हेथिबो से कैपेसिटेंस केते हेथिबो हम केमति पाइबा कैपेसिटेंस फार्मूला होची एप्सिलॉन नॉट a by d एरिया तो सेम अछि डिस्टेंस उडा सेपरेशन अछि तो c प्राइम नबा c प्राइम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a by d प्राइम डिस्टेंस हमको दे देछि 6 मिलीमीटर ठीक अछि सो c प्राइम by c जदि हम c प्राइम दरकार c प्राइम by c हमें करिबा तबे हम पाखरे कोन रहइबो d by d प्राइम रहइबो रेशनल एप्सिलॉन नॉट कटि जिवो सो d ऊपर पड़ेबा d by d प्राइम सो d वैल्यू केते 2 मिलीमीटर d प्राइम वैल्यू केते 6 मिलीमीटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हे जे सेट पे मता को कन्वर्ट करली नाही सो ये हेगला 1/3 तो c प्राइम हेगला केते c/3 ऑब्वियसली जदि डिस्टेंस बढिबो सेपरेशन बढिबो तबे कैपेसिटेंस कमिबो एटा हम कहिथिले आगु पढिथिलु हमें ठीक अछि तो c प्राइम पाइगला हमें c/3 माने c रो वैल्यू जति कि थिला 10 to the -14 फैराड हेगला सो नाउ हमको मागी छि कोन without touching the plate आप सेपरेट कला परे find the new potential difference so new potential difference ए केस रे potential difference केते थिबो से मागी छि फर्स्ट केस रे potential difference दे दितला 200 volt सो ए डाटा को नेकी हमें बाहर करि परिबा चार्ज सब बेला गोटा जिंस मन रखथिबो चार्ज ता स्टोर रहिथिबो चार्ज स्टोर इज सेम इन ईच केस ए केस रे जति के चार्ज थिबो ए केस रे सेति के चार्ज थिबो सो ए केस रे चार्ज केते हमें बाहर कला परे ताको नेकी हमें एटी पकेबा काइना कैपेसिटेंस पाइबो सो चार्ज केते हिथिबो फर्स्ट केस रे q = c into v c रो वैल्यू 3 into 10 to the power -14 into 200 v is 200 so 6 into 10 to the power -12 coulomb so now हमें पाएगा v prime equal to q by c prime q is 6 into 10 to the power -12
by 10 to the power minus 14, which will be equal to 6 into 10 to the power 2 volt. That means 600 volt. 600 volt. ठीक है. So voltage in the second case गला 600 volt. तापर आ गोटे जिंस कहिछि एनर्जी रो रेशियो. एनर्जी 3 नंबर को मैं एठी कंटिन्यू करछि. एनर्जी U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर. C1 टा हला केते U2 उछि हाफ C2 V2 स्क्वायर. C1 ର वैल्यू केते हम जानि छु U1 by U2 डायरेक्ट U1 by U2 करछि by U2 equal to half C2 V2 स्क्वायर. हाफ हाफ कटिला C1 और C2 C बा C प्राइम धरथिलो. ओके C प्राइम धरदा C प्राइम V प्राइम स्क्वायर. ओ C V C and C प्राइम C by C प्राइम केते हम पाइथिलु C by C प्राइम by C टा पाइथिलु 1/3. तो C by C प्राइम टा हिजो 3 हिजो. V by V प्राइम V और V प्राइम V केते अछि V अछि 200 ये होछि 600 200 by 600 रो स्क्वायर. 0 कटिला 2 by 6 3 9 तने 3 into 1/9 which is equal to 1/3. So energy ratio हे गला 1/3. So एमिति हमको आंसर मार करिया पे पड़िबो. सो आशा करछि समस्त बुझी पारथिबो. आपको नहीं कि आउ जते सब न्यूमेरिकल ला वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मु ताको शेयर करिबो मो ग्रुप रे. सेटु हमें तक प्रैक्टिस करिबा. तो नेक्स्ट चैप्टर जे हमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो ए चैप्टर पई एतिकी थिला. धन्यवाद.